Hi friends, welcome back. This time I will take you to Grenville Island from Science World. That's the Vancouver skyline. तुम्हारे पीछे To start this weekend trip, we reached Science World. It's a sunny day, but still it's March and weather can be unpredictable. कभी rain होती है, कभी sun होता है. आज sun है तो we are out. Due to travel restrictions, we could not venture out far away, so we planned a lunch weekend getaway nearby. We start our journey from Science World and Olympic Village. Nice sunny day. Three intellectuals. yes, two gentlemen I guess बातें कर रहे हैं. I thought मैं join in कर लेता. Mr. Armstrong, Mr. Till, Canadian scientist. ये दोनों I guess कुछ conversation कर रहे हैं. And what do you want to do? I just want to put my mask. Do you want to join in? एक देखो यहाँ पे बीच में No. टेबल भी रखा है उन्होंने बैठने के लिए. Winter is gone and summers have come. There is a brewery here and what I like is a lot of people are working here on a sunny day outside. There are apartments which are facing this amazing view, so I like that. This plaza was built around 2010 during Olympic Games. I like the food trucks and I think I want to eat a burger. इतने महीने कोल्ड विंटर डेज के बाद एक सनी डे वी कुड नॉट स्टे इंडोर्स एंड वी प्लान दिस ट्रिप टू नियर बाय आइलैंड. फेरी या एक्वा बस में से कुछ भी आप चूज कर सकते हैं विच यू कैन गेट फ्रॉम 5-6 डिफरेंट लोकेशंस. यू कैन हॉप ऑन हॉप ऑफ थ्रू आउट द वे. इट्स क्यूट. इट्स लाइक 20 minutes ड्राइव टू ग्रेनविल एंड वील ईट आवर लंच देयर. विक्टोरिया तो नहीं हुआ, छोटा छोटू बोट हो गई. स्मॉलर वाला. हाँ ना, वेनिस की याद आ रही है. याद है वेनिस में हर जगह ऐसी बोट थी और एक जगह से दूसरी जगह वैसे जाते थे. Water trips are always fun and this one was a very cute ride. When was the last that you have traveled in a ferry? Rohit is calling Chikki भैया. होती है और एक आइलैंड पे लेके जाती है. This is a great place to spot Vancouver skyline and in few minutes you will reach your destination. मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है and this was a convenient way to click some amazing shots. अच्छा लग रहा है. It's sunny. अच्छा हुआ हम लोग आ गए और धूप ऐसे फेस पे बहुत अच्छी लग रही है. It's like wow, nice. What is the total time बहुत सारे taken? ऑप्शंस हैं. So the one that we have taken will take 20 minutes to reach only. 30 minutes. 20 and we are Is it? going. Okay. Yeah, and we'll reach for our lunch. So lunch के लिए बहुत कुछ ऑप्शन है. साइंस वर्ल्ड से ये लेके आप ग्रेवी में लंच करने जाओ. So much fun. Sunny day you should come. We plan to soak up the sun this summer weekend. Lunch was planned at Grenville Island. अगर आपको नॉर्मल बोरिंग लंच नहीं करना है then this plan will be very helpful to you. Finally Grenville Bridge नजर आ रहा था. That means our destination was near. It was a fun-filled 20 minutes drive. Vancouver is famous for its art. There is a rule that few builders have to create public art. The Red Giant earlier and these Silo Giants, they caught my attention during this trip. So do you like art also? Can you see that board of Greenville Market? तो इसी तरह art, statues and skyline देखते हुए we reached our destination. Okay, so you can go to Maritime Museum from here, 20 minutes, Aquatic Center, and also that is Sunset Beach, English Bay, West End. Yep. Oh yeah, I remember मैं यहाँ आई थी और उस दिन बहुत बारिश थी, बहुत ठंड.
थोड़ा बहुत मार्केट घूमने के बाद अब भूख लग गई थी एंड इट वाज लंच टाइम। लंच में बहुत सारे ऑप्शंस हैं बिकॉज देयर आर वेरियस कैफेज एंड स्टोर्स वेयर यू कैन पिक अप योर फूड आइटम एंड सिट आउटसाइड एंड ईट इट। We had amazing lunch followed by dessert called as Lee's Donut. The details will be shared in Rohit's vlog at Food Trawler. लंच टाइम है, हमने बाहर खाने का सोचा और बहुत अच्छा व्यू है। एक्वा बसेस आ रही हैं, वाटर फ्रंट है बहुत अच्छा। रोहित ने अपना व्लॉग शूट किया है। I'll put the description in the link. I was enjoying sunny day after a very long time and this Vancouver house is something that caught my attention. Gelato या donut? What is the choice? I like both. बहुत tasty खाना था and there is so much to try. I think we need to come back again. Do you think you will come back again? Definitely. भी आप डायरेक्टली ट्रेन लेके भी आ सकते हैं यहाँ पे। And if you stay in downtown, it's very near. It's very nearby. I think. On a we'll sunny just- day, I'm glad. Like, the sunlight is so good. We decided to take it easy and spend some time doing nothing but watching this beauty. यहाँ पर टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, but it was all very peaceful and beautiful. You can spend more time admiring this beautiful Falls Creek, which actually separates downtown from rest of Vancouver city. अगर आपके पास में वीकेंड का कोई प्लान नहीं है तो definitely you can follow this trip. It will be totally worth it. Winters are over and before summer I still have so many beautiful spring vlogs to share with you. Keep coming back to know more about our weekend trips and I will share with you beauty of this beautiful city soon.